Hello and assalamu alaikum guys. Today we're going to be doing O-Level Physics 5054 October November 2022 paper 1 2. Before starting मैं आपको कुछ information बताना चाहता हूँ about this paper and our topical past papers as well. So let's start. About this paper आपके paper 1 के अंदर 40 questions होंगे and each question will be 1 marks. So आपके पास 40 marks होंगे which you can attempt. You have to attempt all 40 questions in order to achieve 40 marks. अच्छा, the time allocated for this paper will be 1 hours and on average आपको 1.5 minutes मिलेंगे for each question. अच्छा एंड नाउ हाउ टू सॉल्व इट। तो ना ही आपने ज्यादा तेज से करने हैं ना ही आपने ज्यादा आराम से करने हैं क्वेश्चंस, बिकॉज लाइक कुछ क्वेश्चंस जो है यू कैन लाइक डू देम स्ट्रेट अवे, लाइक 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको वर्किंग करनी होगी थोड़ी बहुत और उसमें हो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाए। तो यू हैव टू कीप योर पेस मीडियम। अगर आप पेस मीडियम नहीं रखेंगे, ज्यादा तेज कर देंगे, व्हाट विल हैपन इज दैट आप क्वेश्चंस जो है यू कैन जंबल देम अप और आप उनको गलत भी कर सकते हो। अगर आप बहुत आहिस्ता करोगे यू विल श्योरली रन आउट ऑफ टाइम। तो आपने पेस मीडियम रखनी है। एंड नाउ अबाउट आवर टॉपिकल पास पेपर्स। जो हमारे टॉपिकल पास पेपर्स है ना, दोज आर लाइक एनी अदर टॉपिकल पास पेपर्स। जैसे आपकी रीड एंड राइट की बुक आती है, इट कंटेन्स लाइक ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द नेसेसरी क्वेश्चंस, राइट। हमारी भी वैसी ही टॉपिकल पास पेपर्स की बुक है, बट द एज वी हैव ओवर देम इज दैट फॉर एवरी टॉपिक देयर विल बी अ स्पेसिफिक यूआर कोड। आपको हर टॉपिक से पहले एक क्यूआर कोड मिलेगा एंड इफ यू स्कैन दैट क्यूआर कोड what will happen is that when you scan that QR code, it will lead you to a playlist on how to solve all the questions in that topic. So basically, let's say आपके पास एक टॉपिक है which is kinematics. Kinematics में 20 questions है। तो अगर आप kinematics वाला क्यूआर कोड स्कैन करोगे, आपको वो एक प्लेलिस्ट में ले जाएगा which will have all the 20 questions solved in that playlist. सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे इन दैट प्लेलिस्ट और मैं वीडियो फॉर्मेट में आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को। सो या दैट इज द एज वी हैव ओवर आवर कंपेटिटर्स। सो हैविंग ऑल दैट सेड, लेट्स मूव ऑन। इसको हटा देते हैं। सो या सॉरी। Question number 1. The diagram shows three forces acting on a block. The resultant force is 6 Newton to the right. Which additional force produces the resultant force of 3 newtons to the left? First of all, let me tell you some facts about the resultant force. अगर एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन्स लग रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन्स लग रहे हैं, the resultant force will be zero because 10 minus 10 is equals to zero, right? अगर एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन्स लग रहे हैं और उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है और 10 न्यूटन्स, द डायरेक्शन इज सेम, therefore the forces will add. So 10 plus 10 will be equal to 20 newtons, which will be towards this direction. और अगर एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन्स लग रहा है एंड इन अनदर डायरेक्शन 8 न्यूटन्स लग रहा है, तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द लार्जर फोर्स माइनस द स्मॉलर फोर्स, विच विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन्स। ठीक है ना, 2 न्यूटन्स हमारे पास आंसर आ जाए। और इसी से हमारे पास डायरेक्शन भी वो आ जाती है, व्हाट यू कॉल इट, डिटरमिन कर सकते हैं। इससे हम डायरेक्शन भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक बहुत सिमिलर सिचुएशन दी हुई है। Which additional force produces the resultant force of 3 newtons to the left? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें राइट पे 11 न्यूटन्स लग रहा है और लेफ्ट पे कंबाइंड 5 न्यूटन्स लग रहा है, मतलब 3 plus 2 is equals to 5। तो लेफ्ट पे 5 लग रहा है और राइट पे 11 लग रहा है। 11 minus 5 is equals to 6 newtons towards the right, which they have already told us। तो हमसे ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा फोर्स आप ऐड करोगे जिससे हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हुए टुवर्ड्स द लेफ्ट विच इज ऑफ 3 न्यूटन्स। तो अभी हमारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द राइट एंड इन ऑर्डर टू गेट अ रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हमें लेफ्ट की तरफ के फोर्सेस ऐड करने पड़ेंगे। तो हम राइट की तरफ के अगर फोर्सेस ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स है टुवर्ड्स द राइट दैट विल इंक्रीज। तो हमने फोर्सेस जो ऐड करने हैं दैट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ए या बी में से कोई आंसर है हमारे पास। इंस्टेंटली दो ऑप्शंस हमारे पास कैंसल आउट हो चुकी हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन से फोर्स हमने ऐड करने, राइट। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 11 न्यूटन है. 11 न्यूटन टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द राइट, 5 न्यूटन टूवर्ड्स द लेफ्ट. अच्छा, अब हमने ऐसा कौन सा फोर्स ऐड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड 3 न्यूटन. अगर हम 3 न्यूटन टूवर्ड्स द लेफ्ट ऐड करेंगे, दैट विल मेक द कंबाइंड फोर्स 8 न्यूटन. 3 + 5 इज इक्वल टू 8 न्यूटन. तो 11 टूवर्ड्स द राइट minus 8 towards the left is equals to 3 towards the right. Because right पे ज्यादा फोर्स है, therefore the resultant force will be 3 towards the right. अच्छा, अब हमने क्या करना है? ये तो हमारे पास इनकरेक्ट आंसर हो गया है, which automatically means B is the right answer, but I'll still prove it for the for the audience, right? तो अब हमारे पास टोटल फोर्स जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी 5 न्यूटन. ये आ गया और 9 न्यूटन हमने और ऐड कर लिया. 5 + 9 इज इक्वल टू 14. तो 14 न्यूटन हमारे पास आ गया. 11 न्यूटन टुवर्ड्स द लाइट. अच्छा, इसको लार्जर फोर्स हमारे पास अब लेफ्ट की तरफ आ गया, तो हम इसको हटा देते हैं, यहां रख देते हैं. 14 newtons towards the left minus 11 newtons towards the right is 3 newtons towards the left. Because left पे ज्यादा force है, therefore the resultant force will be towards the left. And that is our right answer, which is B. So I hope you understood that. It's not that hard of a question. मैंने बस काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है. होपफुली आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो वाइप्ड आउट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अ टीचर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ 30 सेंटीमीटर रूलर विल नॉट बी इनफ, बिकॉज जो हमारी क्लासरूम होगी दैट विल बी probably in meters, right? In probably in several meters. तो 30 सेंटीमीटर वाला रूलर will not be enough in order to measure the whole classroom. बी, कैलिपर. कैलिपर जो होता है वो बहुत छोटी स्मॉल रीडिंग्स देता है, सो दैट विल नॉट बी इनफ ईदर. और माइक्रोमीटर, स्क्रू पेज भी बहुत छोटी रीडिंग्स देता है, बहुत स्मॉल रीडिंग्स देता है, सो दैट विल नॉट बी इनफ ईदर. अ टेप ऑन द अदर हैंड, दैट इज वेरी हैंडी. तो टेप हम यूज कर सकते हैं, जो आपने देखी होगी, जो मैकेनिक वगैरह यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मेजरमेंट्स. वो जो एक व्हाट डू यू कॉल इट, इंची टेप जिसको कहते हैं, राइट? सो या, दैट इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Which value is 1,000th of a meter? So first of all, what is 1,000th of a meter? 1 meter divided by 1,000 will be equal to 1,000 of a meter, which will be equal to, let's see, 0.001 meter. Acha, 0.001 meter. Now I have to establish another fact that 1 meter is equals to 100 centimeter. Because our answer is in centimeters, we have to do this. 1 meter is equals to 100 centimeter. And in order to convert that meter, 0.001 meter into centimeters, we have to multiply 100 by that value. 0.001 meters into 100 will be equal to 0.1 centimeters. 0.1 centimeters is equal to 1,000th of a meter, which is equals to D. D is the right answer. इस वर्किंग को हटा देते हैं, बिकॉज एक second, ये गलत जगह पे है. इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, so that we have enough space. इसको ऊपर रख देते हैं alongside this question. Question number 4. A car of a car of mass 1,000 kilograms is traveling down a steep hill. तो एक steep hill के थ्रू एक गाड़ी जा रही है. The brakes fail and the driver uses a horizontal sand-filled safety road to stop the car. पाकिस्तान में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसे सेफ्टी मैकेनिज्म्स लगे होते हैं कि लाइक इन द केस कि आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, तो देयर इज अ सेक्शन जहां बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जो आपकी गाड़ी को स्टॉप कर देती है. और आपको पता ही होगा सैंड में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है, देयरफॉर द कार विल स्टॉप इन अ फ्यू मीटर्स. The car enters the sand at a speed of
10 meters per second and experiences a constant stopping force of 2500 newtons. How far does the car travel in the sand before coming to a rest? So first of all, we have to calculate. First of all, we have to calculate what the kinetic energy of the car is. The change in kinetic energy of the car. So yeah, kinetic energy is equals to 1 divided by 2 into m into v square. डेल्टा वी स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इसके अंदर स्पेसेस डाल देते हैं सो यू अंडरस्टैंड डेल्टा व्हाट डज डेल्टा मीन डेल्टा मीन्स चेंज ठीक है ना चेंज इन वेलोसिटी तो या 1/2 into mass which is 1000 with into change in velocity is from 10 meters per second to rest which is 10 meters per second because 10 minus 0 is equals to 10 so 10 square So that will be 10 square is equals to 100. So हम सीधा सीधा इसकी वर्किंग निकाल लेते हैं which is 50,000. अच्छा अगर हम 50,000 अब हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हम लिख देते हैं 50,000 इज इक्वल्स टू फोर्स विच इज 2500 विच इज द स्टॉपिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकालनी है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2500 अभी हमें आंसर मिल जाएगा इससे 2500 विच विल बी 20 meters ठीक है ना It will take 20 meters before the car comes to a rest. So that is our answer. ये अब हम हटा देते हैं ऊपर कर देते हैं कमी पड़ गई है जगह में अच्छा आगे चलते हैं अब बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ स्टीप स्लोप तो जो एक बॉल है दैट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल डाउन अ स्टीप स्लोप राइट जो बॉल है दैट विल एक्सेलरेट अगर आपके हाथ में एक बॉल है और उसको आप ड्रॉप करते हो इट विल एक्सेलरेट एंड देन हिट द ग्राउंड Then the ball rolls along a rough horizontal ground और rough horizontal ground पे deceleration होगी because of the horizontal force because of the frictional force. Which graph shows the speed of the ball at different times? First of all, the ball will be accelerating. मतलब जो बॉल है उसकी जो स्पीड है दैट इज इंक्रीजिंग सो जो हमारे पास बी है दैट इज एलिमिनेटेड देन आफ्टर दैट जब हमारी बॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आती है देयर विल बी अ डिसेलरेशन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स डिसेलरेशन मींस के द स्पीड विल डिक्रीज एक हमें ये नजर आ रहा है एक हमें ये नजर आ रहा है ए भी हमारे पास एलिमिनेट हो गया बिकॉज दिस ए शोज अ कांस्टेंट स्पीड विच इज कंप्लीटली रॉन्ग अच्छा ए और बी एलिमिनेट हो गए सी और डी हमारे पास अभी भी रहते हैं अच्छा अब हमें सी और डी में क्या देखना है एक डिसलेरेशन डिसलेरेशन हमें किसमें नजर आ रही है डी में सी में हमारे पास सीधा सीधा बॉल जाके स्टॉप हो जाती है विच इज इनकरेक्ट अगेन सो डी इज द राइट आंसर सो डी हमारे पास राइट आंसर है बिकॉज जब आप बॉल को स्टॉप आप बॉल को ड्रॉप करोगे द बॉल विल इनिशियली एक्सेलरेट एंड व्हेन द बॉल हिट्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस द बॉल विल ग्रेजुअली डिसलरेट and eventually come to halt, but the ball will not stop instantaneously. ठीक है ना? So D is the right answer. Question number 6. A block of wood is placed on a table. External forces act on the block, but the block remains stationary. A student suggests three conditions for the block to remain stationary. अच्छा, the block is stationary. Block is stationary. That might refer to the block being in equilibrium. ठीक है ना? Block in equilibrium. अच्छा जी हमें कंडीशंस दी हुई है कुछ which might support our claim. Condition P. The resultant force on the block must be equal to zero. Condition Q. The resultant moment on the block must be equal to zero. Condition R. The external forces must act through the center of mass of the block. Which conditions are necessary for the block to remain stationary? Condition P. अच्छा, for a block to be in equilibrium, condition P and condition Q must be
necessary because for a block to be in equilibrium, there must be no resultant forces and no resultant moment. So, condition P and condition Q only. A is the right answer. Question number 7. A car traveling at 60 kilometers an hour on a straight road. The road is dry. The driver applies the brake suddenly. The table shows the thinking, the braking, and the stopping distance. The same car is driven by the same driver at 60 kilometers an hour on the same road when it is wet. The driver applies the brake suddenly again. What is the effect of the wet road on the thinking distance, the braking distance, and the stopping distance? अच्छा जी, सारी की सारी चीजें सेम है. All the things are same except the road being wet or dry. अच्छा, सारी की सारी चीजें सेम है except the road being wet or dry. पहले जो road थी that was dry, therefore the friction was higher. Now the road is wet, therefore the friction is less. अच्छा, जब गाड़ी के और रोड के बीच में वाटर आता है ना, that acts as a lubricant. Lubricant क्या होता है? लाइक ऑयल देख लो, ऑयल इज अ लुब्रिकेंट. ठीक है ना? वैसे ही अगर आप देखें, गाड़ी और सड़क के बीच में जो लुब्रिकेंट आता है दैट इज वाटर. दैट इज वाई काफी दफा जब बारिश होती है तो आपकी मामा या आपके बाबा कहते हैं कि अपनी बाइसाइकिल, बाइक या गाड़ी आहिस्ता चलाना बिकॉज द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लोअर. आई मीन द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज हायर. राइट? अच्छा जी, जो थिंकिंग डिस्टेंस है दैट विल नॉट चेंज. व्हाई यू माइट आस्क? बिकॉज whether the road is dry or the road is wet, that does not change your state of mind. आपने वैसे ही अपनी आपने वैसे ही डिसीजंस लेने हैं. इन द सेम टाइम फ्रेम आपने डिसीजंस लेने हैं. The braking distance will be higher because the friction is lower. When the friction decreases, the braking distance will increase. ठीक है ना? Because the friction between the road and the car determines how fast the गाड़ी will stop. ठीक है ना? And since the braking distance is increasing, the thinking distance is not changing. The overall stopping distance will increase as well, only due to the fact that the braking distance is increasing. अच्छा जी, the thinking distance is not changing. The braking distance is increasing, the stopping distance will increase. Because the stopping distance is the sum of the thinking distance and the braking distance. And since the braking distance is increasing, the stopping distance will increase as well. So yeah, A is the right answer. Question number 8. A car, a car travels on a horizontal road around a bend at constant speed. What is the direction of the resultant force on the car? So what they're saying is that the car is going around a bend. मतलब जो गाड़ी है that is traveling in a circular path. And I have told you this multiple times. Whenever a object is moving in a circular path, the resultant force is always towards the center, which is oftentimes known as the centripetal force. So yeah, it is towards the center of the bend. इसको हटा देते हैं. आगे इसको सामने ले आते हैं. A student writes two statements about mass and weight. Mass is the property of a body which resists change in its state of rest or motion. This is correct. Weight is the amount of substance in the body. This is wrong. That is mass. Which statements are correct? अच्छा जी. Statement 1 is correct. So A is the right answer. Statement B का मैं आपको बता देता हूँ. What is weight? The force of gravity acting on an object, weight is equal to mass into acceleration due to gravity. अच्छा जो आपका mass होता है ना, that does not change. But what does change is the gravitational pull. And gravitational pull जो होता है that determines the weight. अगर आप फॉर एग्जांपल आपका अर्थ पे जो वेट है that might be 90 किलोग्राम, अगर आप मून पे चले जाओगे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है कम, तो आपका जो वेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा because the gravitational field strength has lowered. So yeah, weight is solely dependent on the gravitational field strength while the mass stays constant. आगे चलते हैं. Question number 10. The graph shows how the extension of a spring changes with the masses suspended from it. When the spring is on planet X
and when the spring is on planet Y. अच्छा, जब एक spring है, it is loaded with a load which is same on each planet, but the extension on each planet is different. मतलब planet जो Y है उस पे जो extension है that is less, और planet X है उस पे जो extension है that is higher. Why is that? जो planet X है उस पे जो extension है that is 3 times higher than that of planet Y. We can see that by, अच्छा यहाँ 3 किलोग्राम्स में देख लेते हैं. 3 किलोग्राम्स में आप देख सकते हैं कि planet Y जो है 3 किलोग्राम्स पे, planet Y पे जो extension है that is approximately 14, और planet X पे जो extension है that is approximately 45. 45 divided by 14 is equals to 33.21. So जो planet X है उसकी gravitational field strength है that is 3 times that of planet Y. So ये देख लेते हैं हम. Which conclusion can be drawn by this graph? It is not possible to compare gravitational field strength on planet X and Y. That is completely incorrect. The gravitational field strength on planet X is equal to the gravitational field strength on planet Y. अगर इनके planet इन planets की gravitational field strength एक जितनी होती तो इनकी जो extension है that would be the same as well. The gravitational field strength on planet X is 1/3 of the gravitational field strength on planet Y. That is incorrect as well. Like अगर हम सही से देखें, it is the opposite. Planet जो Y है उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 1/3 दैट ऑफ प्लैनेट एक्स. ठीक है ना. अच्छा, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट एक्स इज 3 times द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट वाई. अच्छा, सिंस द एक्सटेंशन इज like very much like a lot more than planet Y in comparison to planet X, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी in comparison to planet Y. So D is the right answer. Question number 11 पे पहुंच गए हमने. 10 क्वेश्चंस कर लिए. Now we'll do the next 10 questions. Question number 11. A student finds the density of an irregularly shaped object. He chooses his equipment from this list. Stopwatch, measuring cylinder, balance. Which equipment does the student need to use? First of all, एक irregularly shaped object का density निकालने के लिए we will need two things. The mass and volume. वॉल्यूम हमारा निकलेगा मेजरिंग सिलेंडर से. सो बेसिकली हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर होगा, उसके अंदर हमने पानी डाला होगा. उस पानी के अंदर जब हम स्टोन डालेंगे, उस स्टोन की जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, इट विल बी डिस्प्लेस्ड, और जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी चेंज्ड टू अ हायर वैल्यू. यहाँ 20 था, यहाँ 35 था, राइट. और जब हम इसको ऐड करेंगे इन दैट व्हाट यू कॉल इट measuring cylinder, what will happen is that the mass will increase as well. The mass will increase and the volume will increase. The change in mass and the change in volume will get us the density of that object. So we will not need a stopwatch in any case. We will need the measuring cylinder and we will need the balance. So नहीं. So 2 and 3, D is the right answer. इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं. आगे चलते हैं. Question number 12. A uniform beam is pivoted at its center. Two weights are placed on the beam in the position shown and the beam is balanced by an upward force. तो यहाँ दो weights are placed. ठीक है ना. एक place हुआ है और दूसरा इधर. These are creating a anti-clockwise movement and this is creating a clockwise movement. समझ आ गई. One is creating a clockwise movement and the other two are creating the anti-clockwise movement. जब भी आपने एक movement का क्वेश्चन देखना है ना, first of all you have to determine कि कौन से anti-clockwise है और कौन से clockwise movements है, right? तो when you have established the fact कि आपको पता चल गया कि कौन कौन से clockwise है, कौन कौन से anti-clockwise है, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. Clockwise movement is equals to anti-clockwise movement. Anti-clockwise movement. Clockwise movement, as I have told you, this is the only clockwise movement, right? तो 60 into 30. अच्छा, मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू
perpendicular distance. Perpendicular distance. So that is what moment is. तो फोर्स हमारे पास आ गया है 16 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर्स. तो दैट विल बी आवर क्लॉकवाइज मोमेंट एंड आवर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी firstly 40 into 30 plus 50, which is the perpendicular distance from the force F into 50, because that is the distance. So let's do the math. 1800 यहाँ आ गया, 1200 वहां आ गया, प्लस 50 F एक जगह पे आ गया. जब 1800 से 1200 माइनस होगा दैट विल बी 600, और 600 को अगर हम 50 से डिवाइड कर दे वी विल गेट अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन. तो 12 will be our answer. B is the right answer. Question number 13. Four objects of equal mass rest on a table. The center of mass of each object is labeled G. Which object is the least stable? Pay attention on least. ठीक है ना? So first of all, in order for an object to be stable, there need to be like two things that should be established. Firstly, the center of mass should be low. And the second one is that the surface area should be maximum. तो center of mass सबसे highest किसका है? Since we are finding the least stable object, center of mass सबसे highest किसका है? B का. और जो surface area है सबसे छोटा किसका है? B का. राइट, बी का सबसे छोटा सरफेस एरिया और सबसे हाईएस्ट है सेंटर ऑफ मास. सो बी विल बी द लीस्ट स्टेबल ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. ईच टायर ऑफ अ कार हैज अ एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड. तो जो गाड़ी होती है उसके चार पहिए होते हैं, चार टायर्स होते हैं, एंड ईच टायर इज इन कांटेक्ट विद 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया. The car has a mass of 1600 kilograms. The weight of the car is equally distributed amongst the four tires. The gravitational sorry. The gravitational field strength is G, which is 10 newtons per kilogram. What is the pressure exerted on the ground? Pressure का formula क्या है? Pressure is equals to force divided by area. Force हमारे पास कैसे निकलेगा? W is equals to mg से हमारे पास force निकल जाएगा. Force exerted by the car. W is equals to M क्या है हमारे पास? M is 1600 and G is equals to 10. तो W will be equal to 16,000 newtons. अच्छा, फोर्स हम यहाँ लिख देते हैं 16,000 डिवाइड बाय एरिया हमारे पास कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस देयर आर फोर पहिए इन द कार. पहिए क्या होते हैं? टायर्स. एंड ईच टायर इज कवरिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया. तो 4 into 100 हमारे पास टोटल एरिया नहीं निकल आएगा, दैट विल बी 400. तो इससे इक्वल करेंगे, दैट विल बी आवर प्रेशर विच विल बी 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट विल बी आवर एरिया, दैट विल बी आवर प्रेशर. Question number 15. Gas syringe contains a volume V1 of a gas at pressure P1. The volume is reduced to V2 without any changes of temperature. What is the expression for the change in pressure? So, whenever the volume decreases, whenever when volume decreases, what will happen to the pressure is that the pressure will increase since they are inversely proportional. ठीक है ना? So that means that the final pressure is larger than the initial pressure. समझ आ गई? So अगर हम फाइनल प्रेशर को माइनस कर दें फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर, फाइनल pressure minus initial pressure, won't we get our change in pressure? So in easier terms, what I am saying is that the final pressure is P2. अगर हम उससे P1 माइनस कर दें,
Won't we get the change in pressure? Change in pressure? Yes, we will. अच्छा, P2 हमारे पास नहीं है, हमारे पास P1 है। हमने P2 की एक्सप्रेशन निकालनी है। एक्सप्रेशन P2 की कैसे निकलेगी? By using the formula P1 V1 is equals to P2 V2। अच्छा, in order to make P2 the subject, V2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो P1 V1 divided by V2 will give us P2। सॉरी। तो as this suggests कि हम P2 की जगह P1 V1 divided by V2 लिख सकते हैं, राइट? तो इधर हम P2 की जगह P1 V1 divided by V2 लिख देते हैं। P1 V1 divided by V2 minus P1 will give us the change in pressure। तो कौन सी हमें ऐसी इक्वेशन नजर आ रही है? ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं। सी, सी looks like the P1 V1 divided by V2 minus P1। It looks like this right answer, and D is wrong again. So let's clean it up a bit. C is the right answer. Question number 16. A constant force F pulls a block of weight W up the slope shown. How much work is done by F in pulling the block up the slope? अच्छा, वर्क डन की एक फिर से हमें एक्सप्रेशन मांग रहे हैं। जैसे इधर एक्सप्रेशन नहीं मांगी, फिर से यहां भी एक्सप्रेशन मांग रहे हैं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट दिस इज नॉट द, it is the right equation, but it is not the complete equation। ठीक है ना? It is not the complete equation, this is incomplete equation। So the actual complete equation is work done is equals to force into displacement in the direction of the force। मतलब या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू the force। All that I said was to indicate that the if the force is in this direction, the displacement we're gonna take will also be in this direction। ठीक है ना? So मतलब फोर्स यहाँ जा रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेंगे? डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेंगे। तो F into L will be our expression। तो work done is equals to F, which is the force, into L, which is the displacement। That is our answer, B। Question number 17. The input power to a motor is 12 watts. The motor wastes almost 590 joules of energy in 1 minute. What is the efficiency of the motor? First of all, we're gonna find out the useful output. Useful output will be calculated using the total input minus the wasted energy। Wasted power कौन सी होगी? That will be calculated using the formula power is equals to energy divided by time। इससे हमारे पास wasted power आ जाएगी, because this is the amount of energy which is wasted by the motor। Energy 590 है, 590 joules are wasted every 1 minute, which is 60 seconds। So that is 9.833, 9.833। सो ये हमारे पास दे देगा हमें एक आंसर विच इज 2.1667 will be our useful output। So the actual equation for the efficiency is efficiency is equals to useful output divided by total input। यूजफुल आउटपुट हमारे पास अभी निकाला है 2.1667 डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट विच इज 12। और अगर हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100, वी विल गेट आवर आंसर। So this is this, and if you multiply this by 100, we will get the answer। एक सेकेंड। विच इज 18.06%। ठीक है ना? विच इज ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18।
Electric motors have an efficiency of about 90% when used in an electric train. Which forms of wasted energies are produced? Sound only, thermal only, chemical तो होती ही नहीं है. जब इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तब केमिकल हो ही नहीं सकती. इट कुड बी आइदर ए बी और सी, ए बी और डी. थर्मल एंड साउंड, दोनों थर्मल और साउंड प्रोड्यूस होंगे ना, राइट? तो या दैट कुड बी आवर आंसर. अच्छा, डी इज द राइट आंसर एज आई टोल्ड यू. थर्मल एंड साउंड बोथ. बिकॉज जब भी ट्रेन चलती है वी कैन हियर द थर्मल, वी कैन हियर द साउंड. और थर्मल जो होती है इट इज द रेडिएशन, इट इज द हीट विच इज emitted by the train. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स. तो जूल्स डिवाइडेड बाय सेकंड्स विल बी आवर आंसर व्हिच इज बी. Question number 20, the diagram represents four thermometers. Which thermometer has the greatest sensitivity and which thermometer has the greatest range? Sorry, sensitivity and range. First of all, what is range and what is sensitivity? Sensitivity. Sensitivity is the change in length of the liquid per unit temperature. मतलब एवरी, जब भी एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज होगा व्हाट विल बी द रिलेटिव चेंज इन लेंथ. ठीक है ना? दैट इज व्हाट सेंसिटिविटी इज. रेंज क्या होती है? रेंज जो होती है इट इज द मैक्सिमम पॉइंट माइनस द मिनिमम पॉइंट. ठीक है ना? मतलब मैक्सिमम पॉइंट 250 हो गया, मिनिमम पॉइंट 0 हो गया, तो रेंज विल बी 250 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द सेंसिटिविटी. Sensitivity is delta, मतलब change in length divided by change in temp. तो हमारे पास लेंथ तो सेम है ऑफ ऑल द थर्मोमीटर्स, सो द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज द टेम्परेचर. और सिंस द टेम्परेचर इज इन द डिनोमिनेटर, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, राइट? तो सबसे ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर किसका है? सबसे कम रेंज किसकी है इन एन अदर सेंस? तो द द थर्मोमीटर विद द स्मॉलेस्ट रेंज इज क्यू. और आगे हम रेंज चेक कर लेते हैं. रेंज के लिए हमने क्या करना है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मैक्सिमम हम 300 ले लेते हैं, मिनिमम हम ले लेते हैं 100. मैक्स इज 300, मिनिमम इज 100, दैट विल बी 200 डिग्री सेल्सियस की रेंज एस की. और फिर हम आर की देख लेते हैं. आर की 250 माइनस 0 दैट विल बी 250, ये रेंज है. 250 है आर की और एस की 200 है. दैट मींस आर की रेंज जो है दैट इज ज्यादा. तो सबसे पहले हमने सेंसिटिविटी देखी थी. सेंसिटिविटी क्यू की ज्यादा है, क्यू की ज्यादा है. और रेंज किसकी ज्यादा है? आर की. तो सी इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, एयर is trapped in a metal cylinder by a piston. The piston is free to move and the trapped air is at atmospheric pressure. The cylinder is in hot water. The cylinder is taken out of the water and left to cool. What happens to the mass of this air in the cylinder and the pressure as it cools? The mass of the air will not change. Why? Why will it not change? Because the air is trapped. Secondly, the pressure. This part is a bit tricky. एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कुछ बनाने दें. ये ये अच्छा, ये एक बना देते हैं हम पिस्टन. पिस्टन भी बन गया. अब बना लेते हैं थोड़े से पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स. अच्छा जी, let me explain this one. So what they have told us is that the piston is free to move. Therefore, if the piston is free to move, when the cylinder is provided with heat, अगर आप, if you heat the cylinder, what will happen is that the particles will
speed up. And when the particles speed up, they will hit the surface of the, what do you call it, piston more. And when they speed up, they hit the piston more, they will increase the volume. So increasing the temperature will not increase the pressure. Will, एक second. Temperature will not increase the pressure, because when you increase the temperature, the volume will increase, therefore there will be no increase in pressure. And if you decrease the temperature, what will happen is that the particles will slow down, and when the particles slow down, they will hit the piston less. And when they hit the piston less, what will happen is that the piston will fall and the volume will decrease. And when the volume decreases, the pressure will stay the same. Either way, the pressure will stay the same. ठीक है ना? The pressure will not change. Is the right answer. Question 22. Question 22. A mirror is placed in the path of a ray of light. Through which angle does this direction of the ray of light change? First of all, the original path of the ray of light was in this direction, but it ended up going in this direction. जो originally उसने 180 degrees travel करना था, it only traveled 80 degrees, right? तो अगर हम 180 से 80 माइनस कर दें, will we get our answer? That will be 100 degrees का change. And some people might ask कि ये 80 आपने कहाँ से figure लिया? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. ठीक है ना? This angle will be equal to this angle. ठीक है ना? तो this will be 40 as well. 40 plus 40 is 80. So 180 minus 80 will be equals to 100. 100 will be the change in the direction. Question 23. A ray of light in water is refracted at the surface into air. Which diagram shows the angle of incidence I and the angle of refraction R? अच्छा, जो angle हम लेंगे ना, the angle is always measured from the ray to the normal. तो ये हम अप्लाई कर लेते हैं. The angle is always measured from the ray from the from the ray to the normal. ठीक है ना? So this will be the angle which is gonna be taken. एक second. So the angle is always measured from the ray to the normal. The angle is always measured from the ray to the normal. So ये दो angles हम use करेंगे. ठीक है ना? As you can see, this is the same. ठीक है ना? आपने जब भी angle देखना है ना, it will always be from the ray to the normal. तो ये हमें नजर आ रहा है A में. A is the right answer. Question 24. A thin converging lens forms a real focused image of an object as shown. Which distance is equal to the focal length of the lens? The focal length is the distance between the focal point and the optical center. ठीक है ना? It is the distance between the focal point and the optical center. तो मतलब इधर से लेके ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी आवर फोकल लेंथ. ठीक है ना? सॉरी, फोकल लेंथ नहीं, that's length. The focal length is the distance between the optical center and the focal point. अब बताएं ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर इज L and the focal point is X. So the distance between L and X will be our answer. Lx is the equal to focal length. ठीक है ना? B is the right answer. Question 25. Which ray diagram shows the action of a diverging lens? Diverging lens क्या करता है?
डाइवर्जिंग लेंस जो रेज ऑफ लाइट है उनको दूर कर देता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, रे ऑफ लाइट जो है दे आर गोइंग प्रिटी लाइक क्लोज टू ईच अदर, बट आफ्टर पासिंग द डाइवर्जिंग लेंस दे ग्रो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही हमने एक डायग्राम ढूंढना है ए बी सी और डी में से, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ए में जो ओरिजिनल पाथ है ना रे ऑफ लाइट का, इट इज इन दिस डायरेक्शन, बट after going through the diverging lens they come closer to each other. That means that the this is not the accurate representation of a diverging lens. This is not a diverging lens, ठीक है ना। तो बी देख लेते हैं। बी में ओरिजिनली जो रे ऑफ लाइट है they were going in this direction, right, pretty close to each other, but after meeting the diverging lens they come closer to each other. What does that mean? That means कि this is not a diverging lens either. सी देख लेते हैं। सी में जो रे ऑफ लाइट है दे वर गोइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट आफ्टर मीटिंग द डाइवर्जिंग लेंस दे कम क्लोजर टू ईच अदर, सो दिस इज नॉट द डाइवर्जिंग लेंस ईदर। सो डी मस्ट बी द आंसर। और डी में मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ। पहले जो है जो रेज ऑफ लाइट है दे वर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, बट आफ्टर मीटिंग द डाइवर्जिंग लेंस दे चेंज देयर पाथ एंड नाउ दे आर गोइंग इन लाइक दे आर सेपरेट, दे आर दूर फ्रॉम ईच अदर। पहले जो लाइट मीट कर रही थी एट अ सर्टेन पॉइंट, नाउ द रे ऑफ लाइट आर दूर फ्रॉम ईच अदर। दैट इज व्हाट अ डाइवर्जिंग लेंस इज। क्वेश्चन 26, many devices produce electromagnetic waves when operating. Which device produces electromagnetic waves of the highest frequency? Mobile phone, no. Sunbed, it might be. Television controller, ये हो गया। टेलीविजन कंट्रोलर ये हो सकता है। टोस्टर और माइक्रोवेव यू माइट से। नो। सो सनबेड इज द ओनली ऑप्शन बिकॉज इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, ठीक है ना। 27, विच टू फ्रीक्वेंसीज आर बोथ आउट ऑफ द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर अ हेल्थी ह्यूमन बीइंग, हेल्थी ह्यूमन ईयर। जो हेल्दी ह्यूमन ईयर होता है ना, इट कैन लिसन फ्रॉम एनीवेयर टू 20 हर्ट्ज all the way up to all the way up to 20,000 हर्ट्ज। तो इन दोनों में से ऐसी ऑप्शंस ढूंढनी है जो आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज रेंज हो। तो 2 हर्ट्ज जो है दैट इज आउट ऑफ द ह्यूमन ऑडिबल रेंज, ठीक है ना। तो 2 हर्ट्ज हो सकता है और 25,000 हर्ट्ज हो सकता है। 2 हर्ट्ज जो है इट इज वे बिलो द ऑडिबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन, और जो 25,000 हर्ट्ज है दैट इज वे अबव द ऑडिबल रेंज। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला पार्ट, अगला पार्ट 28, sound waves are displayed as a trace on the screen of oscilloscope. Which trace shows a sound that becomes quieter but higher pitch? हायर पिच से आपको इंस्टेंटली क्या चीज याद आनी चाहिए? हायर फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। A sound wave becomes अच्छा, a sound wave that becomes quieter with a higher pitch, ये typically show करेगा a decrease in amplitude, decrease in amplitude, but a increase in frequency, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी। सो कौन सा हमें ऑप्शन नजर आ रहा है? सबसे पहले डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, मतलब जो वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज गेटिंग शॉर्टर। तो सी, आई मीन ए और डी में तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, so that is incorrect. And increase in frequency. An increase in frequency refers to more waves passing. So इधर जो है बी में जो है पहले मोर वेव्स पास कर रही होती है, बाद में फ्रीक्वेंसी कम हो रही है।
और सी में जो है पहले कम वेव्स पास कर रही होती है लेकिन बाद में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है. तो सी इज द राइट ऑप्शन. On an oscilloscope, this would be represented as by a trace that starts with a higher amplitude. Amplitude ज्यादा है और जो frequency है that is less. Initially, initially the amplitude is higher and the frequency is lower. ठीक है ना? So yeah. 29. The N pole, the north pole of a permanent magnet, is placed in turn close to a piece of iron, south pole, and another magnet, and a piece of copper. Which objects are attracted to the N pole of the permanent magnet? First of all, the piece of iron will be attracted to the north pole of a permanent magnet. So, A, the south pole will be attracted, but the piece of copper, जो piece of copper है ना, the copper is not a magnetic material. Therefore, copper will not be attracted to the permanent magnet. A is the right answer. Question 30. Four plotting compasses are placed near a bar magnet. Ignore any effects of the Earth's magnetic field. One compass appears to be like this. जो compass है that is in the downwards direction. What is the possible position of this compass? So first of all, आपको जो options दिए हुए हैं, it is somewhere around here. It is somewhere around here. It is somewhere around here. And it is somewhere around here. तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि in option A it is directed towards the left. In option D, it is directed towards left. In option B, it is directed towards the right. And only in option C, we can see that the magnetic field is downwards. Therefore, the compass will read a downward direction. ठीक है ना? So C is the right option. Question number 31. Question 31. Two oppositely charged plastic rods to each other. Which row describes and explains how the rods move? The rods will move toward each other. Why? Because opposite charges attract. Very easy answer. So C is the right answer. Question 32. A meter that measures the flow of charge in a resistor is placed in a circuit. What is the name of this meter and how is it connected to a resistor? Acha, what they're talking about is ammeter. And ammeter is always connected in series. It is always collected in series to a resistor. ठीक है ना? So yeah, B is the right answer. Question 33. Which device is used to convert electrical energy to kinetic energy? Iron is not. Iron is used to convert electrical energy into heat energy. Kettle. Kettle does the same. It converts electrical energy into heat energy. Lamp. Lamp converts electrical energy into light energy. ठीक है ना? तो डी मोटर. मोटर जो होती है इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वन ऑफ देम कैन बी काइनेटिक. क्वेश्चन 34. व्हाई इज द फ्यूज यूज्ड इन एन अप्लायंस? अच्छा, जो फ्यूज होता है ना इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम एक्सेस करंट. It is used to protect the appliance from excess current. ठीक है ना? जब भी ना कुछ ज्यादा करंट पास करता है मोर देन द रेटिंग, whenever current passes through the fuse, right, which is more than its rating, what happens is that the circuit breaks because जो fuse होता है that blows. So it is practically made to protect the appliance. Question 35. A coil of a generator is rotated at a constant rate between the poles of a U-shaped magnet.
The two ends of the coil are connected to different slip rings. Which graph shows the voltage V between the slip rings vary with the time t? What they're talking about is the AC generator, और जो AC generator होता है उसका जो graph होता है that looks something like C. आगे चलते हैं. Question number 36. Which statement about a transformer is correct? A. Changing the changing magnetic field in a transformer induces an EMF in the secondary coil. This might be correct. B. The core of the transformer is made of iron because iron is a good conductor. It is not made because of iron is a good conductor. It is made of iron because iron is a good magnetic material. ठीक है ना? It is the right answer, but the application is wrong. Question C, part C. The transformer converts alternating current to direct current. It does not convert a alternating current to direct current, although it does use alternating current. ठीक है ना? It will work with alternating current. अच्छा, transformer converts direct current to alternating current. The transformer only uses alternating current. It does not use direct current, and neither does it convert direct current to alternating current. So A, B, and C are wrong, and A is correct. I mean, D, C, and D are wrong. A is correct. जो ट्रांसफार्मर होता है ना, it operates on the base of electromagnetic induction, where a changing magnetic field in the primary coil induces a electromotive force in the secondary coil, और जो allow करती है of voltage transformation in a secondary coil compared to a primary coil, maintaining an alternating current on both of the sides. So yeah, A is the correct representation of a transformer. Question number 37. Three types of radiation emitted by an unstable nuclei are helium nuclei, short wavelength electromagnetic waves, and electrons. So first of all, electromagnetic waves में gamma rays आती हैं. As I can show you, electromagnetic spectrum में gamma rays आती हैं. So yeah, we can get that straight out of the way. So it's either B or A. Helium nuclei होते हैं ना, it is kind of like alpha particles. Helium nuclei is kind of like helium nuclei. Helium nuclei is kind of like alpha particles. Electrons जो होते हैं, it has the same charge as a beta particle. So is the right answer. Question 38. The diagram shows a relay used to switch on an electric motor. A student makes five statements to explain how the relay switches on the electric motor. The statements are not in the correct order. तो पांच statements दी हुई हैं. What is the correct order of the statements? हमने correct order बताना है of the statements. So let's rearrange them. Firstly, what we will do is that we will switch, close the switch, close the switch S. So that will be one, two, three switches. अच्छा ये five. That automatically makes B the right answer, but we'll still continue. The second thing we will do is that we will pass a small current. What will that small current do? It will magnetize the electromagnet. Electromagnet को magnetize कर देगा that small current. Let's see the next option. The current in the coil magnetizes the electromagnet. अगला हो जाएगा वन. ठीक है ना? आगे देख लेते हैं. आगे क्या होगा? जो मैग्नेटाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ना, इट विल अट्रैक्ट द आयरन आर्मेचर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगा आयरन आर्मेचर को. सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज 4. द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर. सेकंड लास्ट में क्या होगा? जो मूवमेंट होती है ना आर्मेचर की, which is caused by the electromagnet's attraction, it will close and contacts in the relay. So that will be 3. No, that will be 2, sorry. The armature closes the contacts, and 3 is automatically the last one.
So D is the right answer. Question 39. Different radioactive emissions have different characteristics. A student lists the following characteristics for an alpha particles. Characteristic P. It has a small positive, it has a positive charge, which is correct. Q. It has a high penetrating ability. जो alpha particles होती है ना उनकी least penetration होती है out of all the radiations. Out of all the radiations, alpha particles are the least penetrating. समझ आ गई? So this is incorrect. Incorrect. Ye- It is a component of electromagnetic spectrum. Only gamma is a component of electromagnetic spectrum. So R is also incorrect. That makes A the direct answer. आगे चलते हैं. A wooden object is believed to be 6,000 years old. Which isotope found in the object is used to determine the age of the object? So they are referring to carbon dating. Carbon dating होती है ये. Carbon dating. ठीक है ना? जो आइसोटोप यूज करते हैं ना टू डिटरमिन द एज ऑफ अ मटेरियल सच एज वुड कह लो आप इज कार्बन 14. जो कार्बन 14 होता है इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप और इससे हम कार्बन डेटिंग करते हैं टू एस्टिमेट द एज ऑफ अ ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. जो हाफ लाइफ होती है ना कार्बन 14 की इट इज अराउंड 5700 ईयर्स और ये इसको बहुत सूटेबल बना देता है फॉर डेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर अप टू 50,000 ईयर्स ओल्ड कह लो आप. So yeah, carbon 14 C is the right answer. So that is it for your paper 1, October, November, paper 1, 2, right? So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी मतलब हटके लगी हो फ्रॉम दी अदर टीचर्स, ज्यादा एक्सप्लेन किया हो मैंने या कम एक्सप्लेन किया हो, डू लेट मी नो. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है डू लेट मी नो. और अगर मेरे अंदर को खामी ऑफ कोर्स a person cannot be perfect, do let me know in the comment section. And otherwise, have a great day. Allah Hafiz.